बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप लोगों को पता ही है कि आई एम इन बर्लिन, तो हमारी एक्सप्लोर बर्लिन सीरीज़ चल रही है। तो आज हम जा रहे हैं एक और फेमस या टूरिस्ट प्लेस है फेमस, उसे एक्सप्लोर करने चलते हैं और आपको दिखाते हैं और क्या क्या चीज़ें बर्लिन में है, क्योंकि यार यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ ख़त्म नहीं हो सकती। टूरिस्ट प्लेस है बहुत सारी क्योंकि मेन कैपिटल है यार जर्मनी की। तो अब चलते हैं और दिखाते हैं आपको, और हम भी थोड़ा एंजॉय करते हैं भाई। We were playing with fire, everything turned to dust. When we aimed to fly higher, we got lost and dragged each other down. We kept running from the shadows in the night, realizing it was not worth the fight. Moving on alone was what felt right, 'cause we were never meant to be. रिफ्रेशिंग सा लगता है, मतलब रिलैक्सिंग सा, कि कहीं भी पानी के साइड में आकर, रिवर या पॉन्ड वाले साइड में आके खड़े हो जाओ। और पता है मुझे इसके अंदर कुछ नहीं होता, बट फिर भी है ना अलग से रिलैक्सेशन है यार। तो ये पीछे यार बहुत दूर तक है, बट अलग ही रिलैक्सेशन, अलग ही मजा है भाई इस चीज़ के कि साइड में आके खड़े होना और खाली पानी में देखते रहना। A few moments later. Guys, we have reached Berlin Cathedral। तो चर्च ही होता है ये, बट देखना चाहिए ना भाई सब कुछ, जहाँ भी आओ मतलब एक्सप्लोर इज एक्सप्लोर, सब देखो। तो भाई ये रहा, ये मेरे पीछे देख सकते हो, यही है। पर यार यहाँ ना एक चीज़ है, किसी को किसी से मतलब नहीं, सब अपने में खुश है। एवरीवन इज बिजी विद हिमसेल्फ। कहीं ना कहीं इन चीज़ों की वजह से है ना, वी मिस आवर फैमिली। देख सकते हो कितनी मेहनत कर रहा है अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो खींचने में। देखो भाई, ये है इसकी एक्स्ट्रा पेमेंट होती है इसकी, बस कुछ नहीं, इतना घुमाएगा ये, और इसके ये ले लेगा 12 से 15 यूरो। ये यहाँ का टूर के लिए भाई। और जगह देखो बस कितनी सी, इतनी सी जगह के लिए बस भाई। ये तो है भी बंद, जैसे आप देख सकते हो, देखो वो गेट सील है, तो अंदर तो नहीं जा पाएंगे, बट यहाँ भी साइड में कुछ है, इसके अंदर जाए देखते हैं क्या कुछ है, इसे एक्सप्लोर करते हैं। We are free at last, living life just like we're supposed to. Goodbye to the past, letting go of the darkness that kept tearing us down. Had to hit the rock bottom to understand that we weren't meant to be. We kept running from the shadows in the night, realizing it was not worth the fight. Moving on alone was what felt right, 'cause we were never meant to be. भाई इसके अंदर जाना नॉट अलाउडेड, मतलब अलाउ नहीं है किसी को भी। कट गया, अब वापस जा रहे हैं। क्या समझना
जाकर ये चीज़ हुई कि बंद था, अंदर नहीं जा पाए यार। देखना तो था इसके अंदर क्या था, बट कोई नहीं, बैड लक, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। मैं भी खुला पाता किस्मत अच्छी हूँ। तो अब चलते हैं यार, थक गए यार। अब शाम होती जा रही है ना, ठंड बढ़ती जा रही है, मतलब ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। पेड़ से तो आप नहीं पता लगा पाओगे कि हवा चल रही है या नहीं, बट क्योंकि यहाँ है ही नहीं, सूखे पड़े हुए, बट हवा तेज़ चलने लग गया, मतलब ठंड बढ़ती जा रही है अब। You said never let me go. 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 It's quite easy to travel in bus because यहाँ जो जर्मनी का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है ना, वो बड़ी कंफर्टेबल एंड रिलैक्सिंग होती है। एंड बड़े आराम से यार यू कैन फाइंड बस स्टेशन एंड ट्रेन स्टेशन। सीरियसली यार, इट वाज रियली ग्रेट। आई होप आप सबको भी अच्छा लगा हो। मुझे तो भाई पर्सनली बहुत अच्छा लगा। रिकमेंडेड बाय मयंक बेनीवाल एंड रियली यार बहुत ज़्यादा सुंदर था, बहुत ज़्यादा। गाइस अब चलते हैं रूम पर, क्योंकि पूरा दिन हो गया यार घूमते घूमते। अब रेस्ट करते हैं, अब फिर कल चलेंगे कहीं और एक्सप्लोर करने बर्लिन। सो मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोस, भाई लाइक कर दिया करो, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मीट यू इन नेक्स्ट व्लॉग।